Hello guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics of chapter number 1, that is number system. Today we are heading to the lecture number 7. Our topic is that real number and decimal expansion. So please don't be afraid of this topic. This is very easy and I also made you clear these topics in my introduction part also, and we are discussing I think fourth time in this lecture. Okay, so let's get started. So we have to focus on some major terms. Okay, the first term is that terminating real number in decimal expansion, and second term is that non-terminating, which has two parts, repeating and non-repeating, and the that's it. Okay, so our first part is टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग रियल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि रियल नंबर्स किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, रैशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमेशा टर्मिनेट होते हैं। तो ये वही एक टर्म है और कोई टर्म नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पॉइंट्स में आते हैं, इनके आंसर्स पॉइंट्स में आते हैं। कुछ और चीज़ नई चीज़ नहीं है, ये हम आपको पहले से भी बता चुके हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स कि जो उसका न्यूमरेटर पार्ट है वो होल डिवाइडेड हो जाए, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी आपको पता है। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो ये रैशनल हो जाएगा, जो कि 1.41444 जो भी जितनी भी वैल्यू आती रहती है, सो ऑन, that will never terminate. So that falls under the category of irrational numbers. Okay, so this is a rational numbers which terminates and whole divides p. Okay, and the answer will be evaluated in decimal expansion also, in natural number also, in whole number also, and in integers also. Okay, so let's discuss the examples. As it is given that here 3 by 2. Okay, so 3 is p and 2 is q. So this I can represent in the form of rational number. Okay, so nothing, this is not a typical example, this is only a rational number. So if we evaluate this fraction, we will get this as a result. Okay, so now discuss another example, 15 by 2, and we evaluate this fraction and we will get the 7.5 as a result, and 100 by 2, 50, 15 by 3 is 5, as 3 into 5 is 15. Okay, so this is terminating because it is terminating at a specific value. Here it is terminating at 5, here it is also terminating at 5, and here it is whole divisible. Okay, so we don't have to take any tension. So this is our rational numbers which are terminating real numbers, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। rational numbers वही होते हैं जो terminate होते हैं। और सेकंड जो टर्म है आपका, उसके दो पार्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसके डिवीजन चलते ही रहते हैं, होल मतलब सो ऑन, इसके आती ही रहती है वैल्यू जो डिवाइड करते हैं। आगे हम एक एग्जांपल्स भी देखेंगे, वी विल सी एग्जांपल्स आल्सो। ओके, सो प्लीज डोंट वरी। तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट है जो कि मैं आपको चौथी बार यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका पहला पार्ट है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को एक और शब्द से भी बोला जाएगा आपके बुक में, रिकरिंग। तो आप कंफ्यूज मत होइए, रिपीटिंग एंड रिकरिंग का मतलब एक ही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसका एग्जांपल्स क्या है, जैसे 20/6। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट होती रहती है। ठीक है, अब जैसे 20/6 है तो 6 3 18, तो 2 बचा रिमाइंडर में, तो 2 में 0 आया, फिर 20 बन गया, फिर 6 3 18 एंड सो ऑन। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, और जैसी
और एक सिमिलर एग्जांपल्स 1/3 भी है जिसको आप इवेलुएट करेंगे तो 0.33333333 नेवर एंडिंग प्रोसेस. ओके. And a second part is that non-terminating, non-repeating, non-terminating or non-recurring. We have also seen these examples root 2 and root 5, as we also know that these value will never terminate. It keep on increasing and they don't have any fixed quotient. So these falls under the category of irrational numbers. Okay. तो ये हमारे पार्ट क्या हो गए irrational numbers के. ठीक है. और वो वाले पार्ट क्या हो गया हमारे रैशनल नंबर्स के. ठीक है. आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं. वेरी इजी है. ठीक है. आइए चलिए बढ़ते हैं. हम एक आपको एग्जांपल्स देते हैं. अच्छा हाँ, उससे पहले एक और चीज बताइए. हम लोग ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational, and we can also define here that real numbers is a combination of terminating numbers and non-terminating numbers. I hope that you would be clear with these terms, that we can also represent real number as a combination of terminating numbers and non-terminating, whether the non-terminating is recurring or non-recurring. Okay. So I hope that it is clear. So next, so let's move to the example part. Now this example will clear all your doubts. Okay. So these two parts we have discussed, and in this part there is two parts also. So I have taken all the examples regarding this. So let's discuss. Okay. Here it is written 10/3 and here it is written 7/8 and 1/7. So let's solve these first. Okay. So 10/3 सिंपल डिवीजन है. आपको डिवीजन आता होगा. 3 3 का 9 माइनस किया 1. एक कैरी पॉइंट से एक कैरी 0 आ गया. 3 3 का 9. ऐसे चलते चलते जाएंगे. ये वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो ये कौन सा कैटेगरी हो गया हमारा. ये हमारा कौन सा कैटेगरी हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है. ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए 10/3. अब ऐसे ही अब आप इसको भी ये कह सकते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में भी आ सकता है. ये रैशनल हो सकता है पर नहीं, इसका जो इवेल्युएशन होगा इस फ्रैक्शन का वो हमारा इरेशनल नंबर्स होगा क्योंकि इसकी कोई फिक्स ही वैल्यू नहीं है. कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. ये आपका मेन कंसेप्ट है. आपको यहाँ क्लियर करना है. तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे 10/3 सर कहते हैं कि हम ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रैशनल है. नहीं, हम लोग डिसाइड तब करते हैं जब हम लोग इस पे इवेल्युएट करते हैं. इस फ्रैक्शन को इवेल्युएट करते हैं. उसके आंसर्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर इट इज अ रैशनल और इरेशनल. ओके. So if we evaluate this fraction 10/3, then we will get the answer as a 3.333333 and so on. Okay, so this falls under the category of non-terminating, which is recurring part, and which is irrational. Okay, so let's discuss another. 7/8. If we divide this, so point, first of all point, because 7 is less than 8, so here we get this answer. So this is terminating actually. So if a student can say that 7/8 we represent it in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, all the conditions are satisfied, and where P and Q are integers. Okay, so sir, I can say that it is a rational number. Okay, for the sake of time, for the while we can say that it is a rational number, but after that if we evaluate this on fraction, we will get 0.875 as a result, and we see that it is terminating at a particular point. Okay, particular number. So at 5 it is terminating, so we can say that it is a rational number. Okay, it is a terminating. ओके. तो ये टर्मिनेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है. ठीक है. तो अब आते हैं दूसरे एग्जांपल में. 1/7. 7 1 ये ऑब्वियस कम है तो 0 लगाएंगे. 10 माइनस 7 30. 4 से किया 28. 2 बचा 0 लगाया. 7 to the 14. ऐसे ही चलता रहेगा. इसकी नेवर एंडिंग प्रोसेस है. तो दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring. Okay,
So I hope that you would be clear with these examples, and I have also discussed all three parts here, that terminating part is rational number and non-terminating part is irrational number. Okay, so and under the non-terminating part there are two more parts, recurring and non-recurring. So I have discussed all these. So let's categorize them. Categorize these examples. That 10 by 3 falls under the category of non-terminating and repeating, as it is evaluated in the form of 3.333. ओके, अगर ये चीज रिपीट हो रही है तो उसको हम बार लगा सकते हैं, कोई भी एक नंबर पे आप बार लगा दीजिए, इससे अंडरस्टूड होगा कि ये 3333 रिपीट हो रहा है। आप 3.3 पे भी बार लगा सकते थे, आप 3.33 पे भी दोनों पे बार लगा सकते थे, क्योंकि 3333 रिपीट हो रहा है पेयर वाइज। या तो आप तीन के भी पेयर में लगा पेयर सॉरी तीन के भी उसमें लगा सकते थे बार, कुछ भी लगा सकते हैं, दिस इज ऑन यू। ओके, तो हम दिखा देते हैं आपको कैसे लगा सकते थे तीन तीन पे। ये जैसे तीन तीन है, आप इसमें भी बार लगा दीजिए, क्योंकि रिपीट हो रहा है, फिर तीन आ जाएंगे। ठीक है, so 10 by 3 falls under the category of non-terminating and repeating. Okay. So our next example falls under the category of terminating, where it terminates at 5. We have divided and evaluated our answers, and we saw in these examples that here it is written that 7 by 8 is evaluated in the form of 0.875. Okay. तो इसका आंसर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अभी दो एग्जांपल्स आपके क्लियर हो गए। थर्ड पार्ट है 1/7 फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। हमने एग्जांपल्स भी देखा था, इसका आंसर आ रहा था 0.1428। ओके, आइए फिर से दिखा देते हैं आपको, दैट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। And 1/7. If we divide this, then we will get the non-terminating, non-recurring as the answer. देखिए, हम पहले अपने अपने मातृभाषा में हम इसको समझते हैं, जैसे कि हमने आपको बोला कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। बट यहाँ पर क्या एक चेंजेस आए, बस वही चीज को एक टर्म दे दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकेगा नहीं, रिपीट जो रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट होगा, है ना। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, ये टर्म दे दिया है। बाकी हमने आपको अपने सिंपल भाषा में आपको समझा चुके हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स है, तीनों कैटेगरी के। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कोई क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ये हमने आपको सब पढ़ा रखा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स के साथ, इन इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इन प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। जब हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग रियल नंबर्स की बात करते ही हैं। हम लोग ने बहुत सारे स्टेटमेंट सॉल्व किए हैं, उसमें भी हमने आपको बता रखा है, ये कोई नई चीज नहीं है। बट यहाँ पर क्या एक स्पेसिफिक चीज हुई है कि हमने यहाँ पर एक हर एक चीज को एक टर्म दे दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग, terminating, non-terminating, repeating, non-terminating, non-repeating. Okay, so that's all for the today. Okay, so if you like this video, please share and subscribe, जैसे कि आपके और दोस्तों के पास जा सके जो कि ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी। तो आप इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट प्लीज स्टे विद दिस channel, okay, so that you would be more clear with many more terms and the concepts. Okay, so that's all for today, so thank you.